Let's see some examples on work. Force is given in this form: 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. And it's given that object moves from position A. Now, how do they define this position A? In this form. Its coordinates are given. Something like this: 4, 0, minus 1. An object, it moves from point A to point B. And coordinates of point B are in this form: 6, 3, 4. When object was at A, it was at rest. And when it reaches position B, they found that its velocity is v. We need to find this velocity v. Mass of object is 2 kg. Now look at the question. An object of 2 kg, when it is at A, is at rest. Coordinates at A are 4, 0, minus 1. This force moves it from point A to point B with these coordinates, and because of the force, object has gained some velocity v. Aim is to find this velocity. इस स्टेज पर वीडियो पॉज करना. हमने क्या क्या सीखा हुआ है अभी तक वर्क में. हाउ डू वी फाइंड वर्क एंड देन वर्क एनर्जी थ्योरम एंड ऑल. उन दोनों कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से कोशिश करना वी फाइंड करने की. अगर नहीं हो पाए then come back and see the solution. Now, we are interested in velocity. Initially it is at rest. We'll go for this. Work done by all forces. Work done by all forces, it does what? It changes kinetic energy. K final minus K initial. Final kinetic energy half m2 v square minus initial kinetic energy. Initially object is at rest. Work. How do you find work? Work is force dot displacement. Well, if we can find displacement, then question is done. Force is already given. You just need to find displacement, take the dot product, and question is done. अगर अभी तक आपसे नहीं हुआ था, then इस स्टेज पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं. Just go for this displacement. Now how to find displacement? हमारा ऑब्जेक्ट कहां से कहां मूव कर रहा है? From A to B. If it is moving from A to B, then displacement S is nothing but AB. Displacement S is what? AB. अगर आपको वेक्टर्स का आइडिया है, अगर आपने वेक्टर्स के लेक्चर्स को देखा हुआ है, तो हम ए बी वेक्टर को किस तरह से कैलकुलेट करते थे उस चीज को देखना. ए बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. व्हाट इज ए बी? Position vector of B minus position vector of A.
And how do you write position vector? B, इसके coordinates क्या हैं? 6, 3, 4. And therefore position vector is 6i cap, 3j cap, 4k cap minus position vector of A. A, 4i cap, 0j cap minus 1k cap. This is 4i cap, 0j cap and minus 1k cap. Now how do you subtract I with I, j with j and k with k? 6i minus 4i, 2i. 3j minus 0j is 3j. 4k minus plus, that is 5k cap. That's your displacement vector AB. 2i plus 3j plus 5k. Next thing is what? F, which is this. S, which is this. And everybody knows how to take dot product. When you take dot product, you should multiply I with I. 2 with 2. 2 into 2, 4. Now it's a dot product. अब आपको इस I को शो नहीं करना है. I dot I, it becomes 1. J with J. When I say J with J, you should multiply their coefficients. Minus 3 into 3, minus 9. K with K, 4 multiplied by 5, that is 20. That's how you take dot product. This is V square. V square is coming what? 15. And therefore, V is coming root over 15 meters per second. क्या करना था? केवल फोर्स को इस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई. मेन चीज ये थी. डिस्प्लेसमेंट किस तरह से फाइंड करना है? किसी भी वेक्टर एप्लीकेशन में ए बी यू गो फॉर इट. पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, when I say I with I, it means 6i minus 4i, you will write 2i because ultimately you are getting a vector. J with J, K with K, you will keep I, J and K. You can subtract I with I, J with J and K with K, and then you retain I, J and K because you are dealing with a vector. Whereas when you take a dot, we are dealing with scalar quantity, and therefore when I say I with I dot I, it becomes what? 1. J dot J, it becomes 1. You are simply multiplying their coefficients, ultimately giving me the answer root over 15 meters per second. Note down this. Now suppose force is given in this form. 2xi cap minus 3y j cap plus 4z k cap. That's the force. 2xi cap minus 3y j cap plus 4z k cap. And question again is similar to the previous one, that object moves from some point, let's say 5, 3, 2 to a point B. And coordinates of B are 7, 6, 3.
And this time round, we just need to find work. Work done by the force when object moves from A to B. A is your initial point, B is the final point. Now when you need work this time, if you go for force dot displacement, which you write F dot AV, then this thing will not work. If you go for work this way, this method will not work. Why? Look at this force X, Y, and Z. What does it mean? As you move from A to B, X coordinate, Y coordinate, and Z coordinate, all these three coordinates are continuously changing. If they all are changing, then this force is non-uniform. When you use F dot S, when work is F dot S, it means for the entire displacement, your force should remain uniform. You can mention it like this, that W equals to F dot S is used when F is uniform. Whereas in this situation, F is non-uniform, and therefore I said this approach will not work. तो अगर F dot S काम नहीं करेगा तो फिर क्या है जो काम करेगा? इतना हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किया हुआ है, that will straight away go for what? dW. Or you write dW F dot ds. F dot ds. What is F dot ds? What is the difference between F dot S and F dot ds? We use F dot S when F is uniform for the entire displacement S. Something which is not possible in this question. As you move from A to B, force is continuously changing. लेकिन वर्क की बेसिक डेफिनेशन यही है F डॉट एस, हम इससे हट नहीं सकते. तो हमने क्या मेथड डेवलप किया? We'll go for that small displacement ds for which force is uniform or almost uniform. जब आप यहां से यहां जाओगे तब आपका फोर्स अच्छा खासा चेंज होगा. But if somebody is looking at this displacement AB and he considers only a small part of it, let's say from this position to this position, this much. If you say this is ds, then from the tail of ds to the head of ds, there is hardly any change in F. Why? Because from the tail to the head, there is hardly any change in x coordinate, y coordinate, or z coordinate. Why do I say there is hardly any change in these coordinates? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का अपना जो movement है, that is what? ds. What is d? D means something which is very, 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 very small. अगर ds की टेल का कोऑर्डिनेट x है तो ds के हेड का x कोऑर्डिनेट होगा x plus dx. Almost negligible change. And therefore यहां से यहां तक जो भी फोर्स होगा, that force will remain what? Uniform. कहां से कहां तक? यहां से यहां तक. When do you use this format? When force is uniform
for the entire displacement S. यहां कहां से कहां तक यूनिफॉर्मिटी है, ds तक, and therefore we go for what, f dot ds. From A to B, we will find all these ds. We'll take the dot product of force, and then finally we will add all these works, which you know is called what, integration. That will give us total work done by the force from A to B. Now, before we proceed and integrate this thing, write down a few statements. W equals to F dot S. W equals to F dot S should be used only if force is uniform for the entire displacement S. For the entire displacement S. Next line. If force is non-uniform, then we use dW equals to F dot ds. Then we use dW equals to F dot ds. But ds is that small displacement. ds is that small displacement for which force is uniform. Force is uniform. Let me explain this part once again with the help of this example. Suppose you're trying to move an object from this position to this position. With the help of this example, you will easily understand the difference between F dot S and F dot ds. You're trying to move an object from this position to this position, and force applied is what, 10. From this to this, displacement is of 5 meters. If I ask you what is work, you will simply write 10 multiplied by 5, which is 50 joules. For the entire displacement of 5 meters, force is what, 10, and therefore work is simply 10 into 5. But if situation is like this, when this object moves, again, a total of 5 meters from this position to this position, in the beginning, force is 10. But as it moves, force continuously changes. Somewhere here, force gradually increases and it becomes 11. Somewhere here, 12, 13, 14, 15, and so on. Let's say when it reaches this position, force has become 16. Force continuously क्या हो रहा था, increase. 10, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.9 and on so on. अब आपसे बोला जाता कि भाई find out work. अगर आप अभी भी 10 into 5 कर रहे होते, 10 multiplied by 5, then that will fetch you wrong answer. Why? Because for the entire displacement of 5, force is not 10 meters. तो फिर क्या करना चाहिए? हमने बोला एक काम करते हैं, इस पूरे पार्ट को छोटे छोटे से डिस्प्लेसमेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं. Suppose from this to this, from this position to this position, let's call it ds1. From this position to this position, that is small displacement ds1, हमारा फोर्स ऑलमोस्ट क्या बना रहता है, 10.
तो आप इस पोर्शन का वर्क निकालोगे, क्या बोलोगे उस पोर्शन के वर्क को, dw1 एंड यू विल राइट 10 मल्टीप्लाइड बाय ds1, 10 मल्टीप्लाइड बाय ds1. सिमिलरली यहां से यहां तक for what displacement, ds2. Let's say force remains what, 11 only. Force changes, but that change is almost negligible because हमने यहां से यहां तक केवल कितना मूव किया हुआ है, ds2. You found work for this small displacement 11 into ds2. अब आपको समझाने के लिए मैंने सीधे यहां से यहां जंप कर दिया है, 1 से 2. रियलिटी में 10 के बाद आएगा 10.1. Now you know that 10.1 भी नहीं आएगा, क्या आएगा 10.01. You know that 10.01 भी नहीं आएगा, क्या आएगा 10.001. को पता है क्या आएगा. There are infinite values from 10 to 11. Then how to take care of that? आपकी टेंशन नहीं है, वो किसकी टेंशन है, मैथ्स की. मैथ्स उसको क्या करेगी, इंटीग्रेट. जो बेसिक थीम है उस पर चलते हैं. हमने यहां से यहां तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाला, इसके बाद 10.1 के लिए निकालेंगे. मैथ्स 10.01 के लिए भी निकालेगी, 10.001 के लिए भी निकालेगी. हमारे समझने के लिए 10 ds1, 11 ds2, 12 ds3, 13 ds4 एंड सो ऑन. एंड अल्टीमेटली अगर आपको टोटल वर्क फाइंड करना है, तो आप इन सारे वर्क को क्या करते जाएंगे, ऐड करने की प्रोसेस इज व्हाट, इंटीग्रेशन. किस चीज को आप ऐड कर रहे हो, f into ds. What is f? This f is that force which is uniform over the entire displacement ds. ds1 के लिए कितना फोर्स है जो कांस्टेंट है, 10. ds2 के लिए कितना फोर्स कांस्टेंट है, 11. ds3 के लिए कितना होगा, कुछ और. आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है. दिस इज एक्सप्लेन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म फोर्स एंड नॉन यूनिफॉर्म फोर्स. एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, पूरा डिटेल में. तो किसी आदमी को इसकी और भी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, you can go and see all the notes of differentiation. Now, f dot ds. What is f? ये रहा फोर्स. ये जो लग रहा है कहां लग रहा है, इस जगह पर. At this point, coordinates are x, y, z. x, y, z इस जगह के कोऑर्डिनेट्स. यहां पर कितना फोर्स है, ये रहा. यहां से आप यहां मूव करेंगे. व्हेन यू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अब आपके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, एट दिस प्लेस कोऑर्डिनेट्स आर x प्लस dx, कॉमा y प्लस dy, कॉमा z प्लस dz. इस जगह की कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, z. कितना मूव किया, ds. इन ds what amount of x changes, dx. Therefore new x coordinate becomes x plus dx. Same is with y, same is with z, z plus dz. यहां से आप यहां आ गए हो, then this ds it becomes dx I cap plus dy j cap plus dz k cap. From this point to this point, ये जो ds है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसको विजुलाइज करना. ये है आपका ds. सपोज कोई रैंडम ds है. इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि इसके जितने 3 कंपोनेंट्स हैं, dx,
dy and dz, they are also very small. So this ds in 3D has got three components: dx, dy and dz. dx I cap, dy j cap, dz k cap. आगे से कभी भी आपको किसी भी जगह पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना है, you can always write like this. Always dx I cap, dy j cap, dz k cap. किसी भी तरह का फोर्स हो, doesn't matter. किसी भी तरह की सिचुएशन हो, small displacement will have three small components: dx, dy and dz. F dot ds, इस जगह पर कितना फोर्स लग रहा है? This. यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है? This. When you write F dot ds, what is F? That F which is uniform for the entire displacement ds. Let's take dot product of these two. Dot किस तरह से लेते हैं? I with I. 2x dx, 3y dy, and finally 4z dz. 4z dz. And you need to integrate this whole thing. You need to integrate this whole thing. I hope you can see it's very easy integration. मैं कैलकुलेशन को इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, देखना. x dx, what is the integration? X square by 2. X square by 2. Y dy, integration is what? Y square by 2. Y square by 2. Z dz, integration is what? Z square by 2. 4 is already present. Z square by 2. Now, यहां पर अभी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ. क्या किया था हमने? हमने W फाइंड करने के लिए किस चीज को इंटीग्रेट किया है? dW. dW का मतलब क्या था? This work, this work, this work, this work, this work, this work. कहां से कहां तक? From this point to this point. You need to tell this much equation, this equation, that integration should be done from A to B. When you say from A to B, इसका मतलब ये है from A to B. This is x starting from A to B. This is called lower limit, upper limit. जब आप यहां आएंगे, from to, similarly from to. Now XA, XA, YA, ZA, XB, YB and ZB. We have all these coordinates. लिमिट्स किस तरह से पुट की जाती हैं आपको पता है. लिमिट्स पुट करने का तरीका क्या है? x, इसकी जगह अपर लिमिट which is xb. What is xb? xb is 7. Square of that 7, square of that minus इस x की जगह पर लोअर लिमिट 5 square. x अपर लिमिट, लोअर लिमिट. लोअर लिमिट का मतलब क्या होता है? इनिशियल पॉइंट. अपर लिमिट, फाइनल पॉइंट. Similarly for y, this is minus of 3 by 2. 3 by 2. y की अपर लिमिट क्या है हमारी? yb. What is yb? 6. Lower limit 3. This is 6 square minus 3 square plus z. 4 upon 2 is 2. ZB, ZA. Z की जगह पर अपर लिमिट which is 3. 3
स्क्वायर माइनस z की जगह पर लोअर लिमिट za. What is za2? Solve this and you will get what? Work. Hopefully समझ में आ गया होगा कि अगर फोर्स नॉन यूनिफॉर्म टाइप का है तो किस तरह से हम वर्क फाइंड करते हैं. Note down everything, especially this part. Now let's see some applications of work. Suppose we have an incline, fixed incline, it cannot move. This angle is theta. An object is placed on top of it, its mass is m, and this height is h. I consider another incline of same height, but this angle is 2 theta. We have changed the angle and we are keeping the height same, h. This is mass m on top of it. Now when this mass slides down the incline, there is no friction. In both cases, friction is what? 0. This m, its velocity is v1. And when m arrives at the bottom of the incline, its velocity is what? v2. And we need to find v1 and v2 in this form, that which one is correct. v1 equals to v2, v1 is greater than v2, v1 is less than v2. Both are fixed inclines. Object slides down from the top of the incline on this smooth surface. There is no friction. At the bottom, velocity is v1. At the bottom, velocity is v2. Now we can solve this question with the help of laws of motion. वहां हम क्या करेंगे? We'll go for this force. What is this force? mg sine theta. In this case, this force is mg sine 2 theta. Once you have got force, well, you know how to resolve these forces. अगर आइडिया नहीं है, then जाइए laws of motion और वहां देखिए किस तरह से हमने forces को resolve किया था. Because of this downward force, this m has an acceleration of g sine theta. This m has an acceleration of g sine 2 theta. Let's call it a2, let's call it a1. Well, you know that as you increase theta, sine increases. This is theta, this is 2 theta, and therefore a2 is greater than a1. लॉजिकल भी है, अगर आप ज्यादा एंगल मेंटेन करेंगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट का. बिकॉज ऑफ दिस इंप्रेशन दैट एंगल ज्यादा है, इसलिए ज्यादा क्या होगा? एक्सेलरेशन. कुछ लोगों को लगता है कि ये v2 इस v1 से ज्यादा होगा.
and therefore they go for C option. But let's continue this force approach first. आपको acceleration पता है. You will go for this displacement. Let's say this whole length is L1. You've got the acceleration. Initially, both blocks are at rest. When these things are on top, they are at rest. And therefore, you will find V square U square 2as. Final velocity V1 square, U is 0, acceleration G sine theta, S is what? L1. जब आप यहां आएंगे तब आप क्या करेंगे? Same equation, V square U square 2as. Final velocity is V2 square. Initial is again 0. Acceleration is G sine 2 theta multiplied by this length. Let's say this displacement is L2. अगर फोर्स अप्रोच करनी होती तो यहां तक पहुंचना होगा. अब यहां पहुंचने के बाद लोगों को L1 नहीं दिखता, लोगों को L2 नहीं दिखता, लेकिन अगर आप थोड़ा से एफर्ट्स डालेंगे तो आपको दिखने लगेगा. Look at this right angle triangle. In this right angle triangle, H upon L1 is sine of theta. H upon L1 is what? Sine theta. And therefore, L1 sine theta is nothing but H. This whole part, L1 sine theta, it becomes H. L1 sine theta. Vectors का आइडिया है आपको. This is L1. L1 का vertical component क्या होगा? L1 sine theta. Same goes with this part. Is L2 का vertical component L2 sine 2 theta. This will be H. L2 sine 2 theta. This will be H, and therefore this becomes 2GH. What do you get? V2 square is what? 2GH. V1 square is what? 2GH. Therefore, what is the correct answer? V1 equals to V2. This was what? Force approach. इसमें आपने क्या क्या करना पड़ता? फोर्सेस को आप रिजॉल्व करते हैं. रिजॉल्व करने के बाद आप एक्सेलरेशन फाइंड करते, लेंथ फाइंड करते. लेंथ के बाद विल यूज दिस इक्वेशन एंड विल गो फॉर V1 एंड V2. प्लस साथ में ऐसा लगता है, होता नहीं, ऐसा लगता है कि हाँ एक्सेलरेशन ज्यादा है इसलिए ज्यादा वेलोसिटी डेवलप होगी. अगर इसी पूरी कहानी को हम लोगों ने इस चैप्टर पर ट्रांसफर किया होता तो हम क्या कर रहे होते? तो हम ये करते, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v square minus half m u square. This is the second method, work energy method. Work done by all the forces is this. We can see that initially object is at rest, and therefore this right hand side is simply what? Half m v square. Now, work done by all. How many forces are acting on this object? How many forces are acting on the object? In fact, you can pause the video and you can write this left hand side part yourself and then come back and see कि आपने सही किया था या गलत किया था. Work done by all. How many forces are acting on this object when it is moving on this inclined surface? एक है mg और दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन. और आदमी को पता है कि इस ऑब्जेक्ट पर इस तरफ
क्या लग रही है नॉर्मल रिएक्शन? इस ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ कितना फोर्स है? mg. These are the two forces acting on this object, mg and normal reaction. अब if you remember work of mg, ये फाइंड करने का हमारा एक सिंपल सा तरीका था. क्या तरीका था? फोर्स multiplied by displacement in the direction of force. Force multiplied by displacement in the direction of force, that is the direction of mg. ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया है. What is the displacement? L1. हमें उससे मतलब नहीं. इस L1 का कितना पोर्शन mg के डायरेक्शन में है? h. हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं mg multiplied by h plus work done by normal reaction. Normal reaction कितना है? n. What is displacement? L2. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और हमारे काम की चीज cos of 90, which makes this whole question, this whole approach worthwhile for the question, given question. mg का वर्क निकालने के लिए क्या किया? mg multiplied by displacement in the direction of mg. लेकिन नॉर्मल रिएक्शन की जब बात आई तो अपने को क्या देखा? नॉर्मल रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90. और अपने को पता है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो? 90. उसका वर्क क्या हुआ करता है? 0. Just because of this, now you can see this whole part is what? 0. M cancelled. Your V is coming what? Root over 2gh. What is special in this? It says that this V has nothing to do with theta. इस थीटा की अपने को कहीं जरूरत नहीं पड़ी. इनफैक्ट हमें सारे फोर्सेस एंड ऑल को रिजॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वर्क एनर्जी अप्रोच को यूज करेंगे. कितना फास्ट है नॉर्मल रिएक्शन इन दिस सेटअप? इन दिस सेटअप यू कैन सी नॉर्मल रिएक्शन का वर्क कितना है? 0. तो क्वेश्चन कितना फास्ट करना चाहिए था? इस क्वेश्चन को कितना फास्ट करना चाहिए था आपको? कितने फोर्सेस हैं? mg एंड n. mg का वर्क क्या होगा? mg multiplied by displacement in the direction of mg, which is h. What is the other force? Normal reaction. Displacement से किस एंगल पर है? 90. कितना वर्क होगा? कुछ नहीं. ये वर्क क्या करेगा? Kinetic energy change, which is what? Half mv square. Initially object is at rest. Done. That's the beauty of this work energy approach. Hopefully समझ में आ गया होगा first method as well as second method. दोनों methods को नोट कर लीजिए. Hopefully cos 90 and all. I've written L2. For this, you can write L1. It doesn't matter. You write L2 or L1, it doesn't matter. L1, L2, कुछ भी हो, ultimately ये सब क्या बनने वाला है अपना? 0 बनने वाला है. तो आप L1 लिख लीजिए, L2 लिख लीजिए, it doesn't matter.